Hey guys, welcome to the Institute of Digital Studies. So in this video, we're going to discuss what are the 5 important steps to learn digital marketing. तो guys, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होगे, मैंने यहाँ पर 5 important steps लिखे हैं जो आपको हेल्प करेंगे डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए, जिसमें सबसे पहला एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स. सी व्हेन यू स्टार्ट द डिजिटल मार्केटिंग जर्नी, इट becomes an overwhelming because you come across lot of tools, lot of terminologies, lot of things that are available online. There are a lot of content, there are a lot of material that are available and online, and that basically leads you to the confusion and frustration. So when you starting your journey, it is very important to start with the basics. First, you have to start with the basics, that what are the things that you should be familiarize yourself with. You should know about the fundamentals such as what is the website creation, what is search engine optimization, what is search engine marketing, social media marketing, and all the things. This will basically help you to lead a foundation for your digital marketing journey. For example, if you can see over there, I have already mentioned everything over there. Now, the second and important step is once you know about the basics of the digital marketing, now it is time to implement it and to take the practical experience about it. Practical experience, for example, you can start working on your own project. You can start working as an intern in any company. You can just do any projects. You can just do it in the freelance. So the main motive is to gain the practical experience, because see, digital marketing is completely practical. So you will be able to get this knowledge when you apply it. जितना आप इसको अप्लाई करोगे उतनी ज्यादा आपको नॉलेज आएगी. जैसे द बेस्ट एग्जांपल कि जैसे सपोज आप वेबसाइट बनाना सीखते हो यहाँ पे ऑन द वर्डप्रेस, तो वर्डप्रेस में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्लीमेंट ऑल द थिंग्स दैट यू आर लर्निंग. फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई भी सेक्शन डिजाइन करना है तो आप वीडियो देखोगे, वीडियो देखने में आपको बहुत ईजी लगेगा, पर जब आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, जब आप उसको डिजाइन करोगे, तो वहां पर आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे. That is the second step, to have a practical knowledge in this field once you start learning it. All right, so you can work on the real projects. You can have some industry experts under whom you can work in this field. Now, the third and important part is you have to be stay updated in the industry trends or with the industry trends. See, डिजिटल मार्केटिंग इज अ कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग फील्ड. हर दिन टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, हर दिन कोई न्यू टूल आ रहा है, एआई इंटीग्रेट हो गया, तो यू शुड बी available or you should be updated with the current scenario what is running in the digital marketing. So that is the third important step that you should follow when you are learning the digital marketing. Fourth and important part is you have to develop your analytical skills. Now, why analytical skills, guys? See, when you do the digital marketing, in digital marketing, you know you have to deal with a lot of data. For example, if you are running the paid advertisements on Google, on Facebook, on Instagram, or any other social media platform, and if you're doing in fact SEO also, you'll be getting the traffic. अब उस ट्रैफिक को आप मेजर करोगे गूगल एनालिटिक्स में या फिर जो इनके एनालिटिकल टूल्स होते हैं वहां पर, एंड दैट ट्रैफिक बेसिकली कम्स इन फॉर्म्स ऑफ डेटा वेयर यू हैव टू जस्ट एनालाइज द ट्रैफिक, यू हैव टू एनालाइज द प्लेटफॉर्म, you have to analyze the city, you have to analyze the device, you have to analyze the technology. So there are a lot of data, so you have to develop the analytical skill. Why? The more you analyze, the more you will be able to optimize. जितना आप एनालाइज करोगे उतना ही आप ऑप्टिमाइज कर पाओगे. ऑप्टिमाइजेशन इन द सेंस कि जितना आप ऑप्टिमाइज करोगे उतना आप कॉस्ट कटिंग करोगे, कॉस्ट कटिंग करोगे तो उतने बेटर आप रिजल्ट्स लेकर आ पाओगे कंपनी के लिए कम कॉस्टिंग पर. दैट इज द फोर्थ इंपॉर्टेंट स्टेप दैट यू शुड इनकॉर्पोरेट व्हाइल यू आर ऑन द जर्नी ऑफ लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग. नाउ द फिफ्थ एंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज you have to continuously learn and adapt to the changes that are coming into the field of the digital marketing. सी, जैसे मैंने बताया कि डिजिटल मार्केटिंग लैंडस्केप कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, हर दिन कुछ नई टेक्नोलॉजी, हर दिन कुछ नई चीजें, हर दिन कोई नई स्ट्रेटजी. सो यू हैव टू बी कंटिन्यूअसली लर्न एंड अडेप्ट. फॉर एग्जांपल, यू आर स्टार्टिंग योर जर्नी इन द डिजिटल मार्केटिंग फील्ड. आपने किसी एक स्ट्रेटजी को फॉलो किया, उस स्ट्रेटजी ने आपको कुछ अच्छे रिजल्ट्स दिए. नाउ इट्स नॉट लाइक कि आप फिर उस स्ट्रेटजी को यूज करोगे फिर से वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा, या फिर आप किसी दूसरे बिजनेस पर उसको इंप्लीमेंट करोगे तो वो अच्छे रिजल्ट्स देगा. डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट द टेस्टिंग एंड ट्राइंग. आपको हमेशा टेस्ट एंड ट्राई करते रहना पड़ेगा, हमेशा नई चीजें आपको ट्राई करना पड़ेगा, नई चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, नई चीजों को आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा. सो दैट विल बी अ कंटिन्यूअस फील्ड वेयर यू हैव टू लर्न एंड अडेप्ट एज पर द चेंजेस. So guys, these are the 5 important digital marketing steps that you should know when you start your journey in the digital marketing. For more such videos, follow Institute of Digital Studies.